नाउ विल स्टार्ट एजुकेशन सब्जेक्ट जून 2019 का जो भी पेपर आया था। फर्स्ट क्वेश्चन, द 4D मॉडल ऑफ ड्रीम, डिस्कवर, डिज़ाइन एंड डिलीवर विल बी द बेस्ट फिट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो कौन से टीचर एजुकेशन का मॉडल के साथ ये जो बेस्ट 4D मॉडल है वो सूट करता है, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। 4D model: dream, discover, design and deliver. Second, in a research study, the effect of three independent variables such as का effect such as gender, socio-economic status of family and locus of control on scholastic performance in social studies was to be ascertained. The dependent variable was measured using the interval scale. Which of the following statistical technique will be considered appropriate for this data? यह है एप टेस्ट। Which of the following is the main feature of qualitative research? क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर क्या है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, अराइवलिस्टिक होना चाहिए और मॉनेटरीली फ्रूटफुल होना चाहिए। 4, कमीशंस कौन सा है और रिकमेंडेशंस क्या दिया गया है देखेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर एजुकेशन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। एजुकेशन कमीशन जो 1964-66 में हुआ था वो स्कूल कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बोला था, विथ नोडल स्कूल, एक नोडल स्कूल होना चाहिए बोला था। फिर नेशनल कमीशन ऑफ टीचर 1 जो था 1980 में, वो बोला था प्रोविजन ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड इट्स लिंकेज विथ कैरियर प्रमोशन। इन सर्विस ट्रेनिंग और कैरियर प्रमोशन के बारे में बोला था नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स 1 1980 का। हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन 2012 में जो आया था वो बोला था इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, क्वालिटी डेवलपमेंट के बारे में प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स के बारे में बोला गया था। फिफ्थ, इन ए school setup, emphasis is laid on giving a message that teacher alone is the knowledge resource. This is called hidden curriculum. Who defined democracy as a form of government of the school, of the people, for the people, by the people? Abraham Lincoln. The focus of concern of sociology of education is classified approach has been on class conflict resolution. The terms of Buddhist philosophy. Which of the following is contributive to right knowledge? प्रज्ञा जो बोलते हैं, right faith and right resolve. At semester end, a teacher wants to assess the learning outcomes of his students. Which of the following test formats will be considered appropriate in this regard? Summative assessment लास्ट में होता है। फिर assertion और reason वाला क्वेश्चन है, teacher education curriculum has to give enough scope to learners for developing their own logical thinking and problem solving ability. Second, the learners today need considerable freedom to explore, inquire and investigate. Both A and R are true and R is the correct explanation. Tier 11. Which one of the following explains the meaning of digital culture? Digital culture का meaning क्या है? The way people live, work, play and learn with ICT is called digital culture. Identify the main objectives of Quality Council of India. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है QCI का, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू लीड नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट टू नेशनल क्वालिटी कैंपेन, टू डेवलप कैपेसिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, टू डेवलप, एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रीडिएशन प्रोग्राम्स, to build capacities in the areas of regulation, formality assessment and accreditation. 13. In a testing survey for class X, students with n is equal to 500. Their mean was observed as 80. Mean कितना है? 80. And standard deviation SD जो है वो है 8 है. Assuming normality of distribution of their scores, how many students would be below the score of getting 88?
88 से बिले एटलीस्ट 88 के से नीचे कितने स्टूडेंट्स को मिला होगा? उसका आंसर दिया गया है हमारा 421. 14. A teacher develops an achievement test with items saturated with high difficulty value and wildly divergent content domain. This may be called an example of diagnostic assessment. 15. Which among the following areas as listed below gets high weightage in NAAC rating of educational institution? हाई रेटिंग किसको मिलता है? करिकुलम को. A school teacher plans a research study to find out the relationship between level of aspiration and socio-economic status of students' parents. Which type of research design will be appropriate for this study? Non-experimental research design. In terms of personality dynamics, which of the following statements best explains the nature and character of one's personality? Human behavior does not occur randomly. Human personality represents an integration of traits. Personality is that which permits a prediction of what a person will do. ये 3 होंगे. फिर 18. Below are given the steps involved in policy formulation. Planning of policy implementation, making a policy decision, evaluation of policy options, ये सब हैं. तो इसको हमें अरेंज करके रखना है, इसका ऑर्डर करना है. तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए पहले क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. देन जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस. उसके बाद क्या करेंगे हम? इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस. देन मेकिंग ए पॉलिसी डिसीजन. उसके बाद प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. उसके बाद क्या होगा? पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट. नेक्स्ट होगा सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स. ठीक है. 19. इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये सही है. इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट एंड मैनेज द इमोशन. ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. अभी मॉडल्स और एक्सप्लेनेशंस देखेंगे. ADDIE, a source, a process that offers a step-by-step framework to assess training and educational material. ये है ADDIE. Assure क्या है? Catering for the specific needs of every learner. Specific need of every learner rather than using general resources. गेगनी क्या बोले थे? एम्फासाइज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ मेंटल इवेंट्स, लर्निंग आउटकम. ठीक है. डिक एंड केरी क्या बोले थे? इट स्टार्ट्स विथ इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड एंड्स विथ समेटिव इवैल्यूएशन. 21. Who among the following thinkers propagated the idea of education of the most talented? Plato. Who among the following thinkers propagated the idea of education of most talented? वो है Plato. Which of the following is directly related to quality enhancement of teacher education program? Emphasis on internship session within build feedback. Which of the following represents ICT integrated strategy? कौन सा है? वो है फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, एडुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. पीयर ट्यूटोरियल नहीं है और कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग नहीं है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट? असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली टू जज स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. 25. स्टेजेस ऑफ साइकिल रिलेटेड एक्शंस. प्लान कब करते हैं? चॉक आउट ए चेंज और टेस्ट जब होता है. डू कैरी आउट द चेंज और टेस्ट. चेक ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज और टेस्ट. एक्ट इम्प्रूव चेंज और टेस्ट with new knowledge. Which of the following components of pre-service teacher education program has a greater scope for experimental learning? Internship through school attachment. The constructive approach to instructional design will lay stress on which of the following action words? Explore, inquire and interpret. Which of the following are the characteristic features of e-learning? Empowering learner to observe personal accomplishment,
promoting self-initiated learning, providing multiple channels of acquiring knowledge, assisting teacher with high degree of coverages to deliver the content regularly. 29. Which of the following statements correctly describe the process of adjustment? Adjustment is a two directional process. ठीक है. फिर during the process of adjustment the instances of conflict and frustration may be perceived in both normal and abnormal personalities. Collective unconscious plays a significant role in an individual's adjustment. ठीक है. 30. In randomly constituted two groups, experimental and control, a researcher obtains the following results after using a parametric t-test. Value of t is equal to 3, n is equal to 300. On the basis of this evidence, which decision in respect of substantive research hypothesis and null hypothesis will be judged? Rejecting the null hypothesis and accepting the research hypothesis. 31. Which of the following factors affect curriculum change? Socio-cultural context, national priorities, and stockholders' needs and aspirations. Identify the specific features associated with macro-level financing. Features from the list given below. Total economy based concept. फिर ऑन सीजिंग चेन ऑफ एक्टिविटी नहीं है. एड्रेसिंग ए लार्ज एंटिटी होगा. टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड ये होगा और मिनिमम स्कोप फॉर रिस्क होगा. एज पर द प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, हाउ मेनी टीचर्स कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय टीचर सुपरवाइजर? 4 to 6 teachers. 5 is instructional model of constructivism has been developed on the basis of which of the following theoretical basis of learning? Learning occurs through the search for the epistemological structure of understanding. Which of the following statement best explain the concept of curriculum? curriculum को कौन अच्छे से explain करता है? Curriculum means a relevant set of learning experiences. ठीक है. Curriculum has to be in consonance with the objectives of education. Curriculum implies transactional as well as evaluation stages. फिर curriculum is a guide for teachers and evaluators. 36. A teacher presents information by assessing from e-learning portals while displaying confidence in the domain of concerned knowledge. This may involve which of the following non-observance of ethicality? 37. Styles of leadership देखेंगे and characteristics देखेंगे. Improvised leadership laissez faire minimal concern for both the workers and the tasks. Country club leadership ये कहाँ है? Focuses on creating safe comfortable working environment, minimal conflict. Task oriented leadership में क्या होगा? Autocratic workers have to complete the task, nothing else. Team leadership में क्या होगा? Compromises made to achieve acceptable performance. 38. From the list of the statements given below, identify the main characteristics which are related with leader-member exchange theory. Views leadership as a process, focuses on the vertical dyadic relationship. फिर explains the effects of leadership on members, teams and organizations. Points our what strengthens and weakens the leadership dynamics. 39. Stage of cognitive development and distinctive cognitive features. Sensory motor, object performance, pre-operational stage, transductive reasoning, concrete operational stage, ये होगा reversibility concept, formal operational stage, ये होगा hypothesis making and hypothesis testing. 40. In which of the programmed instructional design
The sequence of frames follows a demonstrate prompt and release patterns mathematical programs. For the use of online libraries in an effective manner, which of the following possesses a potential threat to quality? Lack of technical skill of the user. 42. What is the distinctive feature of case study research? केस स्टडी रिसर्च का डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द थ्योरी गिवन बाय एल्टन मायो? एनहांस रिलेशन विथ पीपुल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. ये मायो ने कहा था. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द बेसिस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर ए स्टूडेंट टीचर? बेसिक कौन सा है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के लिए? फर्स्ट है स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, और एक है हमारा स्टूडेंट टीचर परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. पीयर ग्रुप फीडबैक नहीं है, फीडबैक फ्रॉम मेंटर नहीं है, सेटिस्फेक्शन ऑफ पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस नहीं है. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फुले हाईली एक्लेम्ड एजुकेशन फॉर वुमेन? Education of women. The Sankhya, the equilibrium of the three gunas, is called Prakriti. In ensuring sustainable curriculum change and improvement, whose role is crucial in the Indian context? Role of students feedback, role of teachers feedback, and role of educational authorities feedback. Parents और public का इतना नहीं है. Educational practice void of dreams, dissent and pronouncement is neutral and democratic. In terms of this statement, the focus of concern in education should be on ensuring deeper personal engagement of learners. 49. For identifying the training needs of in-service teachers, which of the following strategies is most appropriate? Using can do, will do analysis. In which of the following modes of testing a student is given optimum scope for displaying his or her accomplishment? Power test. In which of the following modes of testing a student is given optimum scope for displaying his or her accomplishment? Power test. ठीक है, थैंक यू.